प्रॉब्लम ये होगी कि हमारा वो अधूरा रह गया वो लेमा, और मुझे वो फिर से लिखना पड़ेगा, मुझे लगता है यही प्रॉब्लम होती है इसमें। ओके, एक मिनट। ओके, तो हम ये प्रूव कर रहे थे, क्या है थ्योरम था हमारा, C0 is not complemented in L infinity, ठीक है। और जो हमने कहा था लेमा जो हम प्रूव करने वाले हैं वो था कि there exists a family of infinite subsets of real numbers, there exists a family of infinite subsets of natural numbers, उसका मैंने family का नाम दिया था ये F, family of infinite, it's a family of subsets of natural numbers, but each of the subsets is infinite. Infinite subsets of natural numbers such that if F1 and F2 are distinct members, then cardinality of their intersection is less than infinity. इनमें कॉमन फाइनाइट ही हो सकता है। तो प्रूफ के लिए हमने क्या किया, हमने यूज किया as usual this identity which is a bijection from the natural numbers to the rational numbers, and for each r belonging to R we found out a sequence GNR inside Q such that GNR goes to R as n approaches infinity. We can always do that, and of course हमने लिए ये distinct members हैं इसके, तो अगर ये यहाँ पे distinct है तो इसका मतलब I inverse जो है GNR, ये जो है this is a sequence of natural numbers because rationals का inverse naturals में है, n runs from 1 to infinity, so it is an infinite subset of n. तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने मैप डिफाइन किया phi from R to n raised to n, जिसका मतलब है n cross, ठीक है ना। By doing this map, phi R is equal to this sequence I inverse of GNR, n runs from 1 to infinity. अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये एक infinite subset of rational numbers हैं, right? Or for each R I will get a different set of infinite subset of, maybe for each R I get this set of which is infinite subset of natural numbers, and for each R I will get many. So number of these sets would be as there are real numbers. तो ये तो मुझे मिल गया, I got a family of infinite subsets of natural numbers, right? Whose cardinality is continuum, है ना, क्योंकि ये उतने ही होंगे जितने R है. Now only thing remains to be shown that if I take any two different subsets of this type, they can have only finite intersection. Now the only thing that remains now since clearly, चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, I inverse GNR n runs from 1 to infinity is an infinite subset of natural numbers for all R belonging to set of real numbers. So the only thing that remains to be shown is that cardinality I inverse GNR1 and runs from 1 to infinity
intersection, okay, I inverse of GNR2 and runs from 1 to infinity is less than, is finite for R1 not equal to R2. No, but that is obvious, but it is obvious because if G and if that is not the case, because if that is not the case, then cardinality of Gn, मैं इसको ऐसे लिखूं, R1 infinity intersection GNR2, क्योंकि बाइजेक्शन है, इस तरह से बोल सकता हूँ, is infinity, क्योंकि ये बाइजेक्शन है तो जितने मेंबर्स उधर होंगे उधर होंगे. अगर ये infinity है, which would imply that GNR1 n runs from 1 to infinity and GNR2 n runs from 1 to infinity has a common subsequence. और अगर उनकी एक common subsequence है, which would imply that R1 is equal to R2. देखो, every subsequence of GNR, R1 जो है ना, it's a convergent sequence. Actually, it converges to R1. Same is true for GNR2. It converges to R2. अब अगर इसकी कोई common subsequence है, इसकी कोई common subsequence है, every subsequence of a convergent sequence converges to the same limit. तो वो जो common subsequence है, वो R1 को भी converge करेगी और R2 को. लेकिन limit तो unique होता है in R, so therefore this must be true. Anyway, तो ये हो गया हमारा लेमा, ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन इसका प्रूफ थोड़ा सा, I wish it was a little easier, लेकिन अब है इसका easier proof, लेकिन उससे पहले हमें 2-4 और theorems करने पड़ेंगे जो complicated है ज्यादा. So इसलिए let me stay with this proof of the theorem. अब दिक्कत इसमें ये है कि इसमें जो notations हैं वो थोड़ी, हाँ, ये अगर तुम बुक, तो ये मैंने लिया है, मैंने कहा ना इसमें बहुत सारे, फेबियन की एक बुक है, फेबियन एटॉल का मतलब फेबियन के साथ उसके बहुत सारे बना के फंक्शन थ्योरी ऑफ बानाक स्पेसेस. I don't recommend that book, frankly speaking. तुम्हारे लिए तो एटलीस्ट नहीं, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा हाई फाई है. लेकिन हाँ, ये वाला प्रूफ मुझे, मतलब मैंने उसी को उस वक्त में जब मैंने पढ़ाया था, कंसल्ट किया था. So we have to show that C0 is not complemented in L infinity. तो मैं assume to the contrary. I just assume to the contrary. Assume to the contrary. Assume to the contrary. यहाँ पर मैं एक लाइन ऐड करना चाहूँगा. तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, अब चूंकि मैंने फैमिली का नाम दिया था ना ऊपर F, तो once I prove that, then F जो हमारी फैमिली है, जिनके हमने उसका नाम दिया था, would be simply phi of R such that R belongs to real numbers. ठीक है ना? क्योंकि मैं इसको रेफर करूंगा, इस F को, इसको मैं रेफर करूंगा इन द थ्योरम, इस फैमिली F को. सो इसलिए हम इसका नाम लिख देते हैं. Okay, assume to the contrary, C0 is complemented in L infinity, and let then there would exist a projection P be a bounded मतलब continuous linear projection of L infinity onto C0. तो मैंने कहा सपोज ऐसा नहीं है, तो देन यू कैन हैव दैट मैप जो मैं भी बात कर रहा था,
from the space to the subspace, that is linear, and p square is equal to p वगैरह वगैरह, and let q be equal to I minus p, where I is the identity. अब हमें पता है, I is the identity map. अगर ये bounded linear map है, तो I is also a bounded linear map, so Q is also a bounded linear. So because of course collection of all bounded linear maps is indeed a vector space. तो अगर दो है वहां पे तो उनका difference भी है. Now let gamma be a real number. And let put इसी में ये notation पे थोड़ा ध्यान. Let x gamma, x sub gamma be equal to characteristic function, ये chi है, characteristic function of f gamma, where f gamma belongs to R is a collection constructed above. ठीक है? So it's a characteristic function जो हमने family में ना countable uncountable sets की या of the same cardinality as R की, यानी मैंने उसका नाम रख दिया, तो f gamma belongs to this जो हमारी collection थी. So what is f gamma? It's an infinite subset of real numbers. ठीक है? So it's an infinite subset of real numbers. Oh, no, sorry, it's an infinite subset of इसकी मतलब there are as many of them as real numbers, but each of them is an infinite subset of natural numbers. It's an infinite subset of natural numbers. और अगर मैं कहूँ what should be characteristic function of f gamma, इसकी जो range होगी, है ना? What is after all a sequence? A sequence is a mapping on the set of natural numbers. So chi f gamma जब मैं कहता हूँ, then chi f gamma is a function from the set of natural numbers to real numbers, such that chi f gamma, अगर तुम्हें याद हो, of n is equal to 1 if n belongs to f gamma. It is equal to 0 if n does not belong to f gamma. So f gamma is a subset of natural numbers. So what is this chi of f gamma? It is a map from natural numbers to R with this property. यानी ये एक तरह की sequence बनेगी natural numbers में. यानी मैं कह सकता हूँ अगर suppose 1 इसमें belong करता है तो यहाँ पे 1 आएगा, 2 belong नहीं करता तो यहाँ पे 0 आएगा, 3 belong नहीं करता तो 0 आएगा. मान लो f gamma में 10 belong करता है तो वहां पे 1 है, 4 belong करता है, मतलब it would be something zeros and ones, होगा ना? And of course there would be infinitely many zeros. There would be infinitely many ones. fi जो है, this is an infinite subset, so there would be infinitely many ones. तो कहने का मतलब ये जो chi of f gamma है, it is a sequence, because sequence is ultimately a map from natural numbers to the field. Furthermore, it has infinitely many n, infinitely many ones, and rest are zeros. So of course, इसका मतलब ये हुआ chi of f gamma जो है, I can think of it as a sequence. It belongs to L infinity because it would be a bounded sequence, zeros and ones. But it does not belong to C0. Why? Because it has got infinitely many ones, right? So, और जिसको मैंने simply लिखा है x sub gamma, क्योंकि इसकी infinitely many ones हैं, it has a subsequence that converges to 1. So it can either converge to 1 or it may not converge at all, है ना? So that would be the situation. So it will not converge to 0. So ये हमारी मतलब अभी तक ना हमने इसको ये जो हमने तामझाम किया इतना, what did we want to get to? ठीक है? Now ये तुम्हें समझ में आ गया? X gamma is actually this characteristic function. Therefore, I can think of it as a sequence because it's defined for natural numbers.
with infinitely many ones and other zeros. Okay, ये मैंने लिख दिया। यहाँ तक तो हमारा थियरम है। मैं इसको थोड़ा रफ को इसको अलग अलग रखना पड़ता है। ओके, वी क्लेम दैट, अब हमारा क्लेम ये है, वी क्लेम दैट फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव and n belonging to the set of natural numbers, cardinality of the real numbers gamma, इसको ऐसे करते हैं, चलो ऐसे लिखते हैं, cardinality, card means cardinality, इसमें कितने मेंबर्स हैं, gamma belonging to R such that, अब थोड़ा सा, अब चूंकि ये जो है, ये जो x gamma है, I can think that this belongs to L infinity, so I can apply Q on it. So I can think of Q of x gamma, है ना? Q is a map from L infinity, of course, to L infinity. We don't know, है ना? Because इसमें identity है. Identity is a map from L infinity to infinity. Of course, P is a map from L infinity 0. लेकिन यहाँ पे हमें I भी है ना? So Q is a map from L infinity to L infinity. That's fine. So it means this belongs to L infinity. So this is a bounded sequence. तो what I, मैं notation एक use करूँगा, जो कि Fabian ने की है, तो मुझे भी करनी पड़ेगी। ऐसे मैं लिखूंगा Q gamma n, यहाँ n लिख दूंगा, उसका मतलब है nth component of this sequence, nth component of Q of x gamma. So ये मेरी notation है. Using this notation, मैं ले रहा हूँ cardinality of gamma such that modulus of the scalar, modulus of qx gamma का जो nth component है, this is greater than epsilon. ऐसे सभी रियल्स का मैं क्लेम करता हूँ this is less than infinity, ये cardinality. So assume to the contrary, तो ये मैं क्लेम करता हूँ ये less than infinity है. Okay, assume that it's k, assume that should I write it like this, q of, मान लो ये components इतने हैं, x gamma I n, nth component is greater than equal to epsilon for all I running from 1 to up to k, right? यानी मैं कह रहा हूँ suppose इसकी cardinality k है, ठीक है, मैं क्लेम करना चाहता हूँ ये फाइनाइट है, तो मान लो ये k है, ठीक है. So that's I'm assuming that, that is I'm assuming that cardinality of let me gamma belonging to the set R Q x gamma, should I write it like this, नहीं ऐसे ही रहने दो, तो assume that this is true. Okay, मान लो इतने एलिमेंट्स के लिए I runs from 1 to k के लिए ये less than infinity है, तो हम दिखा देंगे then k is finite, तो फिर हो जाएगा that this, हमारी ये क्लेम जो है ये सच हो जाएगी और उससे हम प्रूव करेंगे कॉन्ट्रडिक्शन. ओके, लेट्स स्टार्ट दिस. ओके, डिफाइन, अब थोड़ा सा यहाँ तुम्हें सब्र करना पड़ेगा बिकॉज इसमें थोड़ा नोटेशंस होगी. नाउ यू हैव टू रिमेंबर x गामा इज इक्वल टू characteristic function of this set f gamma, where f gamma is an infinite subset of natural numbers. Okay, so now what I do now I've got finitely many, I have chosen these finitely many is k, हमें नहीं पता ये finite. I've got I runs from 1 to k, 1 2 up to k, मैंने अब तक k लिए ये gamma I,
Then I can define x. Of course, it is also defined now. This thing is also defined, right? ये index है, ये real numbers. Okay. Then what? Then what we do? I define this x dash. चलो ये वाला रफ है. अब मैं define करूंगा x dash gamma I. X dash gamma I is actually, इसको मैं ऐसे define करूंगा. It is chi of f gamma I minus union j runs from 1 to n, j not equal to I. Oh, मेरे पास तो n है ही नहीं, मेरे पास k है. Okay, f gamma j, and it is characteristic function of this set. Set थोड़ा इधर उधर है, लेकिन है actually, मतलब क्या बोलते हैं इसको, मतलब set ही है. So suppose मैं देखना चाहूंगा chi dash gamma 1, वो होगा simply x gamma 1, ठीक है ना. और what would be x dash gamma 2? It would be actually characteristic function of f gamma 1 minus f gamma 2 minus f gamma 1. तो इसी तरह से x dash of gamma 3 would be characteristic function of f gamma 3 minus f gamma 1 union f gamma 2. यानी कहने का मतलब ये जो ये सीक्वेंसेस हैं जिसकी ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस हैं, इनका जो सेट है जहां पे ये नॉन जीरो है, तो हम कहेंगे जो should I write it like this? हाँ, इस तरह से मैं करूंगा. तो हम चूंकि ये पहला वाला इससे निकाल रहे हैं, जिस सेट पे ये नॉन जीरोस हैं वो आपस में डिसजॉइंट होंगे. हम कहेंगे इनका सपोर्ट डिसजॉइंट है. सपोर्ट इनका डिसजॉइंट है. सपोर्ट मीन्स जहां पे फंक्शन वैनिश ना हो, और सीक्वेंस इज आल्सो फंक्शन. इसका मतलब वो जगह है जहां पे जो सीक्वेंस की एंट्रीज हैं वो जीरो नहीं है, और यहाँ पे तो खाली जीरोस और वन है, एक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है. तो जब मैंने इस तरह से इनको लिखा, सो देन क्या बोलते हैं, इनका सपोर्ट डिसजॉइंट होगा. देन अब मैं ऐसे लिखूंगा x गामा i माइनस x डैश गामा, ये कंस्ट्रक्शन ही इसमें थोड़ी डिफिकल्ट है, अदरवाइज नो इशू, इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ f गामा i, ये जरा सेट थियोरेटिकल है, intersection union j runs from 1 to n f gamma j, नहीं k है यहाँ पे, मैं फिर से भूल जाता हूँ, of course j not equal to I. तो यहाँ पे मैं यूज ये कर रहा हूँ, I am using this fact, characteristic function of a minus b is always equal to, तुम चाहे तो चेक कर सकते हो, characteristic function of a minus character for any two sets. ठीक है. अब अगर मैं a को लेता हूँ f गामा i, b को लेता हूँ f गामा i माइनस जो भी था यूनियन f गामा j runs from 1 to k, j not equal to I. इसमें ये कंस्ट्रक्शन ही डिफिकल्ट है, so you have to bear with me. So उसका मतलब क्या हुआ, ये जो ये यहाँ पे है x gamma I minus x dash gamma I is actually equal to characteristic function of f gamma I minus characteristic function of f gamma I minus this union j runs from 1 to k, j not equal to I f gamma j, to which in our case would be characteristic function of a minus characteristic function of b, which is the same thing as characteristic of a minus b, है ना. और a और b ये वाले सेट है, right? Now let's see what happens. So I have got now a minus b, so it is actually f of gamma I
माइनस f of gamma I, ये जो मेरे यहाँ पे ये सेट है ना ये, so this should be equal to, ये यहाँ पे होगा, it is actually characteristic function of f gamma I minus f gamma I minus union j runs from 1 to k, j not equal to I f gamma j. लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा मैं अलग से जाऊंगा सेट थ्योरी में. It's like a sort of a situation a minus, let me call it a minus c, क्योंकि b में किसी को दे चुका हूँ, क्योंकि ये अगर ना मैं इसको c नाम दे दूं, so this set would be actually, तो ये तुम्हें याद रखना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ ना, मैंने ये वाला राइट हैंड साइड के बराबर में दिखाऊंगा. तो a minus a is equal to a intersection c complement whole complement. आई थिंक वही आएगा, वो बनेगा a intersection जल्दी से a complement union c using De Morgan's law, or using the distributive law, it would be a intersection a complement union a intersection c. ठीक है, so a intersection a complement तो phi है, this is just equal to a intersection c. अब तुम देख लो a की जगह क्या है, this is my a, this is my c, और you can see I have written exactly that. जो मैं यहाँ से गया हूँ ये बराबर है, ये मेरा a था, इंटरसेक्शन c क्या था, c था ये पूरे का पूरा सेट. So this is done. Oh yes, we have done it. उफ, अच्छा अब देखो तो इस करने के बाद now I want to say that कि ये जो now it's clear, ये जो ये सीक्वेंस बनेगी ना, x gamma I minus x gamma I dash, which is basically the characteristic function, चलो मैं लिखता हूँ, characteristic function of f gamma I intersection union j runs from 1 to k, j not equal to I f gamma I. ये जो characteristic function है, इसमें only finitely many non-zero terms होंगे, यानी मैं कहूँगा this must converge to zero, this must belong to C0. Why? Because just take the, मतलब ये जो ये सेट पे फोकस करो, it is characteristic function of a finite set. अगर हम दिखा दें, then it can have only finitely many non-zeros. यानी ये है ना इसके बराबर. So let's do. अगर मैं ये दिखा दिया ये set finite है, we are done. So what do I have? You've got fi intersection f gamma 1 union f gamma 2 union, so on and so forth. लेकिन I इसमें नहीं है. You have f gamma I minus 1 union f gamma I plus 1, so on and so forth. Then you have f gamma k. अब as you know, this would be actually f gamma I intersection f gamma 1 union f gamma I intersection f gamma 2, so on and so, जो भी यहाँ पे है. Important ये है f gamma I intersection f gamma k. Important ये है कि ये किसी के साथ भी I इनमें से कोई भी नहीं है. Just 1 2 I is missing. So यानी ये distinct sets हैं, और distinct sets का intersection finite होगा by lemma of 1, because x gamma, नहीं सीधे लिखता हूँ, f gamma I intersection j runs from 1 to k, j not equal to I, f gamma I is a finite set. क्योंकि ये सारे के सारे finite है, finite union of finite sets. Okay, थोड़ा लंबा चौड़ा था. So therefore it belongs to C0. Therefore Q of this thing x gamma I minus x dash gamma I would be equal to, it would be x gamma I, I should write it like this. It is actually I minus p है ना.
सो मैं सीधे लिखता हूँ दिस इज इक्वल टू 0। उसकी वजह मैं यहाँ पे लिख दूंगा। वैसे वो प्रोजेक्शन से भी हो जाता है क्लियर, बट नेवरदलेस लेट मी डू इट। तो Q इज जस्ट इक्वल टू I माइनस P, और तुम्हें पता है इट इज प्रोजेक्शन वगैरह। सो अगर मैं अप्लाई करता हूँ Q इस पे, सो Q ऑफ x gamma I minus x dash gamma I would be equal to what? अगर इसका फाइनाइट सपोर्ट है, सो दिस वुड बी Q ऑफ, तो पहले तो ये है कि ये C0 में है, और C0 में चलो कर देते हैं पूरा ही। So it would be x gamma I minus x gamma I dash, then I have minus P of this thing, and P of x gamma I minus P, सीधे कर देता हूँ मैं, just a minute, इसको रब करते हैं। मैंने Q लिखा ना यहाँ पे नहीं, क्योंकि मैं I को अप्लाई कर रहा हूँ, फिर मैं P को अप्लाई कर रहा हूँ, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, टाइम नहीं है हमारे पास। ओके, P is linear, so this would be P of this thing, चलो मैं अप्लाई ही कर देता हूँ, P of x dash gamma I, और ऑफ कोर्स जो है P is identity, P is, जब मैं कहता हूँ P square is equal to P, इसका मतलब P is applies as identity on C0। देखो, लेट मी बजाय इस आर्गुमेंट के ऐसे लिखता हूँ मैं सीधे, इस तरह से अगर हम सोचें तो बेटर है। देखो, P is a map from L infinity to C0 such that P of x is equal to P of x। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब P of C0, because P of L infinity क्योंकि ऑन टू है is equal to C0, तो P of C0 is equal to C0। यानी C0 का कोई एलिमेंट जो है उस पे आइडेंटिटी एक्ट करेगा, उसका मतलब P minus I of C0 is equal to 0। That means P minus I, that is Q of anything x is equal to 0 for all x belonging to C0। Done। क्योंकि ये C0 में है तो therefore this would be equal to 0। थोड़ा लंबा छोड़ा, which means that क्योंकि लीनियर है, Q of x gamma is equal to Q of x dash gamma I। Of course this is true for all I runs from 1 to up to k। ओके ओके, अब थोड़ा सा हमें और करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे दूसरा पेज चाहिए होगा क्योंकि ये लंबा छोड़ा है। लेट्स थिंक ऑफ Q ऑफ, अब थोड़ा ध्यान रखना है, summation I runs from 1 to k, signum of this number, you've got Q x bar x dash gamma I का nth component, इसका signum multiplied by x dash gamma I as a vector, this belongs to L infinity, उसका nth component। I hope so okay, sum of nth components is nth component of the sum, because Q is linear, I can write it as summation I runs from 1 to k, signum बाहर आ जाएगा, Q x dash gamma I n into Q of x dash gamma I का nth component। So that would be just signum of something into this is just modulus. So it is summation I runs from 1 to k. It is just modulus of this component x dash gamma I n. So which each of this, we have assumed that each of these numbers जो हमने किया था is greater than equal to epsilon, है ना, for all n। So that means this is जो sum है, this is greater than equal to k epsilon। So just to remind you that signum of any real number x is modulus of x divided by x। तो इसका मतलब signum of x of any number into x is actually mod x। Of course that should not be 0, right? Otherwise it's 0। ठीक है,
So it is defined this is 0 if x is 0. अगर x 0 नहीं है तब ये obviously divide कैसे करेंगे. On the other hand क्या करेंगे थोड़ा जल्दी से करेंगे. On the other hand इसका जो सुप नॉर्म है it would be less than equal to 1. Of course these are just ones and zeros. तो इसका जो maximum होगा summation k I runs from 1 to k signum of, because it's after all the nth component, ये vector है sorry q of x dash gamma I का nth component का signum multiplied by x dash gamma I. इसका ध्यान रखना. This is less than equal to 1 because these are just zeros and ones. So primum 1 होगा. So okay, and therefore k epsilon is less than equal to nth component of the same thing, nth component of this thing. Summation I runs from 1 to k signum q थोड़ा सा x dash gamma I का nth component multiplied by x dash gamma I whole का nth component. So which is less than or equal to norm, of course, because it's positive or इसका norm less than 1 है. So this is less than or equal to its supremum. So that इसका supremum क्या होगा? nth component तो इसका supremum ये है q of जो भी है q of summation I runs from 1 to k क्या है अपना signum of same thing q x dash gamma I n signum of this thing into x dash gamma I applied to q है ठीक है इसको actually q applied to this thing I think whole thing क्योंकि इसी का सुप्रीमा फाइन ठीक है infinity which is less than or equal to norm of q into this vector जो भी है summation I runs from 1 to k signum of q of x dash gamma I n जो भी है x dash gamma I infinity which is less than equal to q because norm of q because this is less than equal to 1. So what do I have? It implies that k is less indeed finite. ये जो q है इसका एक upper bound है यानी अगर मैं k को लेता हूँ इससे less तो उसकी cardinality it implies that cardinality of gamma belonging to R such that q of x gamma का जो nth component है greater than equal to epsilon is less than equal to norm of q by epsilon. तो indeed इसकी जो cardinality है वो ये चूंकि this is some fixed number divided by some positive number so it's a fixed number. Okay, so this is some fixed number so this is finite hence अब यहाँ पे